Assalamu alaikum. Good evening to one and all. Today in this video I will be discussing on body cavities, body regions as well as the body membranes which lines the internal organs of our body. So before starting this video, let me remind you about the previous class in which we have discussed about the normal anatomical position of human body. We have discussed about the different four types of the body positions which we are giving to the patients based on their conditions, and also we have discussed about the body plans and body surfaces. Okay, so as we are going to discuss about the body cavities understanding, my humble request to you is that please watch this video till the end so that you can get all the points clearly understood. Okay, so before we move into the body cavities, first of all one thing should come in our mind, that why we need to learn or why we need to know about the body cavities. यानी हम अपनी बॉडी कैविटी जो होती है, जो हमारे शरीर की गाहें होती है, उनके बारे में हमें क्यों जानकारी करनी है या इनके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, उनके बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए. ठीक है, why? Because it will give you the clear picture and we can say clear representation of the body's internal organs and what are the compositions of the body's internal organs, understanding what are the substances, what are the sub-organs which are located internally in your body, so you can get the clear identification, you can also investigate, you can also identify, and you can also get the clear representation of the body organs. Okay, so now we must know that what are body cavities. Understanding, so body cavities are defined as a space or compartment or potential space which occupies the body's organs, substances, fluids, blood vessels, membranes, etc. So this is all about the body cavities. Okay, so now before we move to the today's main topic, that is what are all the body cavities, we must know that in our anterior part of our body and also posterior part of our body there are body cavities located. Some body cavities are located on the anterior, that is ventral aspect of your body, and some are located as well on the posterior or dorsal aspect of your body. Okay, so today we are going to discuss about that thing. If you want to take down, you can take down, you can also take the screenshot. So mainly we can say that body cavities we can classify them into as I already told you that some body cavities are located on the ventral, that is anterior part of your body, and some are located on the posterior part of our body. Okay, so based on that only we are going to classify the body cavities. Ventral or anterior, dorsal, or we can also say posterior. Okay, so in the ventral, that is anterior part of our body, there are mainly three types of body cavities. First one is thoracic, second one is abdomen or abdominal cavity, and third one is pelvic cavity, and next one is dorsal, that is
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर बॉडी, यानी जो आपका बॉडी का पीछे वाला हिस्सा होता है, तो उसमें कितनी बॉडी कैविटीज प्रेजेंट होती है? उसमें सिर्फ 2 होता है, ठीक है। जो आगे वाला हिस्सा होता है बॉडी का, उसमें 3 कैविटीज होती है, और जो पीछे वाला होता है उसमें 2 कैविटीज होती है। सो वी कैन से cranial cavity and spinal cavity. Spinal cavity हम और एक नाम बोलते हैं, that is vertebral, क्योंकि उसमें स्पाइनल कार्ड होता है ना, स्पाइनल कार्ड में वर्टिब्रल्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, सो एज you can observe, okay, on this picture that I have drawn here, image, okay, you can see that thoracic cavity, that is the ventral aspect of your body, जो आपकी बॉडी का जो हिस्सा है, ठीक है ना, ऐसा ही इंसान जैसे हमें बनाया है ना, तो ऐसा ही है ना, तो ये जो है ना, ये वाला, so this part is the chest cavity, okay, so chest cavity starts from right after the end of the root of the neck, जो आपका neck होता है ना, उसका जो लास्ट पार्ट होता है नेक का, वहां से हमारा thoracic cavity स्टार्ट होता है, कहां तक? अप टू द abdominal cavity, level of abdominal cavity, जहां से abdominal cavity स्टार्ट होता है वहां तक thoracic cavity होता है, and after that the thoracic cavity started and it will be ending up to the, ठीक है ना, इट विल बी एंडिंग टू द स्टार्ट अप ऑफ द पेल्विक कैविटी, यानी पेल्विक कैविटी तक होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, और उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी का जो एंड होता है, ठीक है ना, तो उससे लेके बराबर कहां तक, जो एंड ऑफ द पेल्विक कैविटी होती है ना, या हम बोल सकते हैं जिसके बाद हमारा लेग्स आता है, ठीक है ना, तो तब तक क्या आता है, जो कैविटी उसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है ना। उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स लोकेटेड होता है, पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, उनके नाम बताऊंगा मैं, ठीक है। सो वी कैन से मेनली ऑन द वेंट्रल aspect of your body there are mainly 3 cavities, that is ventral, that is thoracic cavity, abdominal cavity, and as well as pelvic cavity, okay. Then next one is the posterior aspect of your body. So in the posterior aspect there is cranial cavity, जिसमें आपका head and face, उसमें जो bones होता है, उसमें जो भी systems होता है, जो भी organs होता है वो आता है, और उसके बाद spinal cavity, या we can say also vertebral cavity, जिसमें mainly हमारा vertebrals आता है, ठीक है ना, जिसमें mainly जो spinal cord होता है, ठीक है ना, उसका part होता है, या बाकी बॉडी के organs आते हैं, understanding? So these are all the body cavities which I have shown, okay. So but after this, no, thoracic cavity is subdivided into this one we can say cavities, यानी thoracic cavity में और 3 cavities आती है, ठीक है, और 3 गाहें आती है, तो कौन कौन से आती है thoracic cavity में mainly और 3? So first one is pericardial, second one is pleural cavity, and third one is mediastinum. ठीक है, so we can say thoracic cavity, under the thoracic cavity there is pericardial, there is pleural cavity, and there is also mediastinum. So pericardial का मतलब क्या होता है, यानी pericardial का मतलब होता है, peri means around and cardial means heart, यानी हार्ट के अराउंड में, हार्ट के इर्द गिर्द में जो कैविटी होती है, यानी जिसके अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, या उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। सो वी कैन से इसमें मेनली होता है हार्ट, अंडरस्टैंडिंग? सो नेक्स्ट वन इज द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी क्या होती है? इन विच आवर बोथ लंग्स आर लोकेटेड, जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग होता है ना, तो एक कैविटी में वो पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। सो वी कैन से लंग्स, अंडरस्टैंडिंग? एंड इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मीडियस्टिनम, जो मीडियस्टिनम होता है ना, व्हाट इज मीडियस्टिनम? मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मीडियस्टिनम इज द स्पेस बिटवीन, दैट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स, जो टू लंग्स होती है ना उनके दरमियान, ठीक है ना, स्टर्नम की पीठ, जिसमें स्टर्नम आता है, जिसमें ब्रोंक्स आता है, जिसमें हार्ट, ह्यूमन हार्ट भी आता है, ठीक है। सो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर उस स्पेस को हम बोलते हैं मीडियस्टिनम, अंडरस्टैंडिंग? सो दैट स्पेस इज lies between the two lungs, so we can say between two lungs, understanding? Okay, now next one is about the cranial cavity. cranial cavity में मैंने आपको पहले ही बोला था, cranial cavity के अंदर आएगा, ठीक है ना, जो हमारा हेड होता है उसमें स्कल बोन्स आएगा, उसमें ब्रेन आएगा, अंडरस्टैंडिंग? ठीक है ना। सो उसमें आल्सो जो ब्रेन का टिश्यूज आएगा, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स आएगा, अंडरस्टैंडिंग? सो वी कैन से अंडर द cranial cavity we can say mainly CNS, that is central nervous system,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा ब्रेन आएगा, ठीक है ना, उसके बाद आएगा ब्लड वेसल्स, मेनिंजेस आएगा, यानी कवरिंग ऑफ द ब्रेन, CSF आएगा, ब्लड वेसल्स आएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी। तो फेशियल बोन्स आएगा, जो हमारा फेस होता है उसके अंदर जो बोन्स होता है वो भी आएगा, उसमें बोन्स होता है, या नर्वस होता है, ठीक है ना। सो दैट विल ऑल बी लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी। एंड नेक्स्ट इज स्पाइनल कैविटी या वर्टेब्रल। इसमें मेनली क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, अंडरस्टैंडिंग। सो स्पाइनल कॉर्ड, understanding. So this is all about the cranial cavity and spinal cavity. So these are all the main this one cavities of our body which are located on the anterior as well as the posterior aspect of our body. Okay, so these were all the body cavities which are located on your body. Now let's coming to the next point, that is abdominopelvic regions, or we can say regions of our body. So we can say there are mainly 9 types of different regions which are present in our body, ठीक है ना। So we can say mainly these regions are present in the abdominopelvic cavity, यानी जो ये abdominopelvic cavity है ना, यहाँ पे आपको अच्छे से गौर करना है, ठीक है। So abdominopelvic cavity, abdominal cavity कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट आफ्टर द एंड ऑफ द चेस्ट कैविटी या thoracic cavity। thoracic cavity से जब एंड होगा, यानी यहाँ से लेके हम डायरेक्टली हो सके यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। So this is known as abdominopelvic cavity. So what are all the regions which this mainly this cavity is consisted of, that is known as abdominopelvic regions, understanding. So there are mainly 9 regions, and one of the most important thing that I am going to tell you is that this pelvic cavity and the abdominal cavity is separated by one organ, or we can say one organ, or we can say one dome shaped organ, that is known as diaphragm, ठीक है ना। सो द डायफ्राम हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में हमें मदद करता है, ठीक है। सो वो डायफ्राम जो होता है ना, सो डायफ्राम मेनली अगर हम बोलेंगे यहाँ पे लोकेट होता है, ठीक है, लंग्स के नीचे में, ठीक है, उसके ऊपर लंग्स होता है, जो मेनली क्या करता है, इट सेपरेट्स your pelvic cavity from the abdominal cavity or abdominal cavity from the pelvic cavity. So in this only we are going to discuss about the body's 9 main regions, understanding. So okay, so first one is this one is known as right hypochondrium, and this one is epigastric region, and this one is left hypochondrium, sorry, hypochondrium, and next one is right lumbar, this one is umbilical, region, this one is left lumbar, and next one, this one is right iliac, or we can also say inguinal, this one is hypogastrium region, hypogastrium and hypogastric region, and last one is left iliac or
inguinal region. ठीक है. Okay, now we are going to discuss about the body membranes. Okay, there are mainly basic 4 types of membranes: synovial membrane, mucous membrane, peritoneal membrane, and serous membrane. Understanding? So we will just have a brief introduction about these membranes. Okay, first one is the synovial membrane. So synovial membrane is related to the synovial joints. Okay, so this synovial membranes, it lines the membranes of the synovial joints where there is a synovial fluid which helps us in the free movement of the synovial joints. For example, shoulder joint. Okay, so that is about the synovial membrane. Next one is the mucous membrane. So mucous membrane lines the mainly the gastrointestinal system and also the respiratory system. Understanding? So there is the presence of the mucus. Okay, this mucus mainly contains, it is mainly made up of the connective tissue. Okay, so in this connective tissue, in the deep of the connective tissue, there is the presence of the goblet cells. These goblet cells has various functioning. Okay, for example, they will identify the microorganisms, they will be providing the this one what antimicrobial effect. Okay, they will be trying to kill the microorganism. Understanding? So in order to maintain the normal functioning of your respiratory system as well as your gastrointestinal system. If we have to talk about the that where is this mucus membrane located, we can say in your mouth, yeah, we can say oral cavity, oral mucosa is there, right? In stomach, we can say stomach mucosa is there. Okay, so where there is the presence of mucous membrane. Understanding? So now next one is the serous membrane. This serous membrane, it is mainly composed of 2 types. Okay, we can say serous membrane. Serous membrane is mainly composed of 2 types. First one is the parietal serosa and second one is the visceral serosa. What is this parietal serosa? This parietal serosa, what it does, it mainly lines the walls of your body, internal walls of your body. For example, chest wall. Understanding? So जो chest wall होता है उसके साथ जो membrane होता है उसको हम बोलते हैं parietal या parietal serous serosa membrane. Understanding? And next one is the visceral serosa. Visceral serosa, it lines mainly, it lines the internal organ membrane. Okay, सो जो बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन, जो आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन होता है उन पर जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो किसका बना हुआ होता है? विज़ुअल सेरोसा का. एज द नाम इंडिकेट्स, विज़ुअल मतलब ऑर्गन. Okay, understanding? So we can say the main difference between the parietal serosa and the visceral serosa is that parietal serosa, it lines the walls of your body like chest wall, abdominal wall, and the this one visceral serosa, it lines the internal membranes, we can say internal organ membranes of your body. Understanding? And what is the main function of this visceral serosa and the parietal serosa? The main function is that it prevents your this one internal organs from the friction of the muscle, the friction which is caused by the muscles. ठीक है ना, जो फ्रिक्शन मसल की वजह से होती है ना, ठीक है ना. सो ये क्या करता है, वहां पे जो होता है ना, मतलब जो पेरिटोनियल सेरोसा होता है और विज़ुअल सेरोसा होता है ना, क्या ये क्या करता है, मेनली ये जो आपके जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनको मेनली ये वेट रखता है. अंडरस्टैंडिंग? जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है ना, उसकी वजह से आपके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं या आपके जो बॉडी के अंदर इंटरनल जो मेम्ब्रेन होते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता है. ठीक है. नाउ लास्ट वन इज अबाउट द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. दिस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ओके, देयर इज द this one serosa. Okay, serosa membrane which lines transparent serosa membrane which lines your peritoneal membrane या peritoneal cavity. peritoneal cavity के अंदर mainly आता है abdomen, आता है intestine, आता है. ठीक है ना. उनके ऊपर क्या होता है, serous membrane. अंडरस्टैंड? ये serous membrane है, चाहे वो विजुअल है या पेरिटल. अगर हम बोलेंगे abdominal cavity तो फिर हम बोलेंगे parietal serosa होगा. अंडरस्टैंडिंग? abdominal cavity पर या कैसे abdominal wall पर. ठीक है ना. अगर हम बोलेंगे एब्डोमिनल ऑर्गन्स यानी हम बोलेंगे स्टमक, तो स्टमक के ऊपर जो होता है ना सेरोसा, उसको हम बोलते हैं विज़रल सेरोसा. ओके ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द cavities of your body. We have discussed about the various this one abdominopelvic regions. We have also discussed about the this one membranes of our body. Okay, so if you have any doubt, okay, you can ask me or you can share your feedback in the comment section so that I will pick up the doubt and I will make you explain in the another video. Okay, whenever
पॉसिबल। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।